आज शावरमा एनिमल पाया, मैंने फलाफल खाया और मुझे आइसक्रीम खाने का मन था, तो वो अरब बकाला भी बंद हो गया था और अमीर का बकाला भी बंद हो गया था। आज शावरमा एनिमल पाया, मैंने फलाफल खाया और मुझे आइसक्रीम खाने का मन था, तो वो अरब बकाला भी बंद हो गया था और अमीर का बकाला भी बंद हो गया था। आज शावरमा एनिमल। हेलो हेलो बच्चों, वेलकम। आज का एपिसोड हमें एम सरप्राइज करेंगी। क्या देख रहे हैं आज हम? This show was called Mano Salva, and I would also like to mention that this show is based on a Urdu novel by Umaira Ahmed, and she most of the shows made on her novels have been amazing. I've seen most of them and they're really good. आज हम देखने वाले हैं this very small interview clip from a Pakistani show, and we're going to give you tips on how not to give an interview if you go anywhere. And the actor in this interview, his name is Faisal Qureshi. I'm sure everybody who's watching this, उनकी अम्माओं को जरूर मालूम होंगे वो, and सारी हमें मालूम है वो कौन है. I vaguely remember watching this clip like years ago. The context of the show is that he is a very ambitious man, and he wants to be very rich in life, and he wants to, have all the nice things, all the rais type की चीजें. His family is from middle class, and he's engaged to a girl from a middle class family. And he gets very annoyed by all of that stuff. तो इस इंटरव्यू में वो सारा वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी लाइफ के साथ जो फ्रस्ट्रेशंस हैं. That is what I remember, but we're going to rewatch it and we're going to see ki, is it worse than what we remembered or is it not as bad? This is N. And this is M. Let's begin. Okay, I really want to focus on एक word he said. What is your asset in life? My intelligence. What is your asset in life? My intelligence. Asset in life. मुझे पता नहीं क्यों resident सुनाई दे रहा है for some reason. I'm thinking कैसा सवाल है, क्या जवाब है? Second देखते हैं. Number 2. My academic records. Number 2, my academic record. क्यों? If you didn't get मेरा intelligence कहाँ से आ रहा है? मेरी जब grade देखेंगे उस पे 100 out of 100 होगा. In real world, nobody cares about your academic records. Nobody is going to ask how much you got in your 10th or 12th boards, guys. Nobody is Don't going to believe ask them. that question. Number 3. My ambitions. Plural था, एक ambition नहीं है, इनका बहुत सारे ambitions हैं. वो सिर्फ पढ़ाकू नहीं है सिर्फ. अब Passions लल्लू पंजू हैं. मत समझिएगा इनको. हाँ. Ambitions हैं इनके. 4. My passion. Number 5. मतलब अगर आपको समझ नहीं आया कि ambition already means कि वो मैं passionate हूँ उसके बारे में. Going back to my academic record, मुझे English में 100 out of 100 आए थे. ये इसके synonyms मालूम है. So ambition or passion. My practicality. That comes at number 6. What? Love or family? अच्छा. Both. Are you engaged? I'm engaged. She is doing her graduation. What's so special? The right answer is none of your business. आप उनका इंटरव्यू उनको हायर करना चाह रहे हैं, मुझे हायर करना चाह रहे हैं. She is very pretty. So, that's the only reason. No, there are many others. She's really pretty. That's the only reason. No, she makes the best dal chawal. And the korma, don't even get me started. Like? She is caring, loving. She's scaring. Everyone, go to your significant other and tell them you scare me. I'll go and tell my husband you're so scaring. Please do. And then feedback हमें comment section में सब बताएं कि क्या उनके significant other ने क्या. Honest, sincere, and selfless. Okay. मतलब इतनी सनसनी है वो कि उनको sincere होने की जरूरत नहीं है. वो सनसनी plus sincere है तो sincere. Sincere. You're so sincere that it's scaring. Okay. Let's finish the interview. What will you prefer? A beautiful woman with all these qualities or a beautiful woman with a lot of money? Beautiful woman with a lot of money. Oh, Beautiful with lot of money. मतलब कि इंग्लिश में 100 out of 100 आए बट a lot नहीं कह पाए. Lot of money. Asset उनका academic records है, लेकिन ये चीज नहीं पता है कि क्या एक articles कहाँ लगाने, अभी तक के ये नहीं उनको समझ में आया. At this point, what I don't understand is
he is clearly stating in the first 3 minutes of the show that he doesn't want to be engaged to his current fiance. If as soon as he finds another woman with a lot of money, he's going to go and get married to her or engaged to her. Now, my question to you, N, is which job is he interviewing for? कि इनको ये सब क्वेश्चन आंसर करने पड़े. आपको क्या लगता है? कोई मैच मेकिंग वेबसाइट का इंटरव्यू है. What kind of woman you लेकिन like? She's ऐसा pretty. लग रहा है कि ये उन लड़की के बिहाफ पे इंटरव्यू देना है क्योंकि ये लड़की के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहा है और वो लड़कियों के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. इनके फियांसे से उनको क्या मतलब है? ये जिस चीज का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं. आज भी हद में रहिए. ये क्या सवाल हुए? इंटरव्यू लेना है या आपको मेरी जिंदगी के बारे में पर्सनल डिटेल्स जाननी है? खबरदार. देसी आंटी अंकल बैठे होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, तभी ऐसा इंटरव्यू चल रहा होगा. ऐसा लग रहा है जी, शादी जी, की जी. दावत पे बैठे हैं, कोरमा नान खा के लाओ भाई गुलाब जामुन और फालूदा लाओ, वेट कर रहे हैं. Oh और yeah, बताओ how is तुम्हें your कैसी लड़की fiance? कैसी पसंद है? अच्छी लगती She's है? very pretty. She's scaring. sometimes वो सो रही होती है, कहती है जान तुम सही हो, तुम्हें पहले स्केयर होता हूँ फिर मैं कहता हूँ ये केयरिंग है. Didn't you say you had an interview like Sheraz? The guy who was interviewing me was definitely like Sheraz. That guy literally came in chappals and jeans and shirt. Just usually interview में, like if it's a professional interview, they have like an interview template where they read कि आपकी क्या qualities हैं and your work ethic, and they give you rating or something like that. उन्होंने like he was yawning when he came in. He was rubbing his eyes. और वो आए और उन्होंने उनके पास जो A4 पेपर की गड्डी थी उसमें से पेपर निकाला, 1 लिख के सर्कल किया और मेरा नाम पूछा and all of that. And then he said, I just want to tell you that I don't care about the way I do business. I just want to earn a lot of money so I can send it back to Pakistan to help the underprivileged people. Lot of money. And then he said, I just want to confirm with you, you're not the type of person who's going to morally police me. Like he said all of this in Urdu. I can't remember what he said. And I said, obviously, if something incorrect is happening in front of me and I am going to be a part of it, I am going to put a stop to it or at least try to. So, and he said, are you sure that you want that to be your answer? And I was like, yeah, of course. Oh my God. And then he was like, okay. And then I don't know, there were some more weird questions. And then that wasn't even the worst. But I remember when I narrated the story to my dad, उनको इतनी हंसी आई and मतलब एकदम ठट्टे लगा के हंस रहे थे, ये कैसे सवाल है ये? इंटरव्यू में वो ये पूछ रहे थे. And the next day he was texting me on WhatsApp and he was like properly chatting कि अच्छा ठीक है, you didn't get the job but let's talk. And I had to block him. इतने creep थे, giving me the heebie-jeebies just talking about it. I came out of that interview room and I was so glad to see my father sitting there and so glad to, because it was one of those times that I felt I had to voice that interview off of me. Even though like I do want to repeat this, he wasn't creepy towards me until the next day. But in that interview, the way he was talking, I did not like it. It was very weird. I don't even think you need to justify that, because if you in any place feel unsafe, then you have a right to feel unsafe because you have an intuition and your intuition said this guy's a creep, regardless of when he showed you his true creepiness. Because I really think, especially as women, we need to be extra cautious about creeps. I swear, sometimes I look at someone like they're just crossing. In my heart, I have always known creepy lag rahe hain, but then I'm like, no, and you're just overanalyzing. Be nice to people, and then they talk to you, and then they reveal how creepy they are in that one line, and you're just like, मैंने काश अपनी intuition से काश I just kept walking. Why did I stop to give this person, मैंने कहा था, I told you so. अपने आप से ही कहते हैं, सही बात है. Let's watch some more before we end. हाँ देखिए बिल्कुल. शोरबे के तालाब में हड्डी और आलू ढूंढते ढूंढते इतना वक्त गुजर जाएगा कि रात के खाने का वक्त हो जाएगा. क्या? Please rewind it a bit more. Please. I want to see what happened that led to this frustration. शिराज, बेटा जूता ना उतारना अभी. जरा बाजार से जाकर चाय के लिए कुछ चीजें ले आओ. तुम लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ. खाने में क्या है? दाल रोटी. Sad music के accompanying दाल रोटी.
That basuri in the background accompanying dal roti, that is every child's background score whenever they ask their mother खाने में क्या है and they say करेले बने हैं या दाल चावल बने हैं. मैंने नहीं खाना. Why is she so embarrassed that she made dal roti? Slap that dal on his face. She made it in the kitchen for him. इसको कहते हैं bias. Before this dialogue even came, music was like. Don't hate on dal roti, man. Dal roti is awesome. Just Dal put some roti ghee fans with here. it. Just some achar with it. ताजी थोड़ी ताजी भिंडी रोटी हो, गरम गरम दाल हो, उसके ऊपर बघार हो प्याज का, उसके साथ बाद में गरम गरम चावल मिल जाएं. Your loss, Sheraz. मैं अंडा तल देती हूँ बेटा. अंडा खा खा के तंग आ गया हूँ मैं. इसको कहना चाहिए था मैं अंडा खा खा के अंडा बन गया हूँ. अंडा is the most practical thing, Sheraz. प्रैक्टिकलिटी और इंटेलिजेंस आपकी इस वक्त कहाँ है? सब इंटरव्यू में छोड़कर आ गए. Academic records तो अंडा खा खा के ही हुआ था, बादाम और अंडे. Let's forward and watch only his scenes. Okay. अच्छा मैं पड़ोस में सफिया से पूछती हूँ, उसने आज आलू गोश्त बनाया था, वहाँ से ले आती. शोरबे के तालाब में हड्डी और आलू ढूंढते ढूंढते इतना वक्त गुजर जाएगा कि रात के खाने का. शोरबे के तालाब में हड्डी वड्डी ढूंढते ढूंढते इतना वक्त गुजर जाएगा कि रात के टाइम का आ जाए. Wait, pause. कौन सा आलू गोश्त खा रहे हैं? कोई नदी है आलू गोश्त की जिसमें जाके तैरना है? What he means to say is because she's going to check it with her neighbor. तो नेबर भी इतने पुअर हैं कि उन्होंने एक बोटी डाली होगी और 2 आलू के पीस डाले होंगे, मेनली शोरबा होगा. तो इसीलिए वो ये टॉन्ट मार रहे हैं कि शोरबे के तालाब में हड्डी और आलू ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा कि रात का खाना हो जाएगा. बेसिकली स्पॉइल्ड ब्रैट बने हुए हैं. तो उसमें अंडा कह डालना. रही हैं आलू गोश्त अंडा डाले ना, थोड़ी दाल मिलाना अच्छा होगा यार. ट्राई तो करो. To be honest, अंडा tastes good with everything. Seriously, सही बात. मैं तो इंटरव्यू का पूछने आई थी, कैसा रहा? मैं भी पूछना चाह रही हूँ, बताओ जरूर. कैसा रहा? वाकई? अरे बस दुआ करना. एक बात बताओ, बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने का ख्याल आया था. आप इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए मतलब आपको 2 हफ्ते लगे वो सब मेमोराइज करने में. Ambition, Number 1, Number 2, Number 3. I shouldn't mix them up. मतलब आपको फेशियल एक्सप्रेशन से तो प्रैक्टिस करने थे मेरे में देख देख के कि अब मैं कब पर भी लगूंगा, अब कैसे इनसाइड जो क्रैक कराऊंगा लगूंगा. मुझसे मिलने का ख्याल ही नहीं है तो मैं खामखा तुम्हारे घर के चक्कर क्यों लगाता रहूं भाई? आपके ख्याल के अलावा और आता क्या है मुझे? बच्चों अपनी अम्माओं को बुलाओ. ये क्या कन्वर्सेशन हो रहे हैं बच्चों? थर्ड पर्सन बुलाओ. अकेले अकेले गुफ्तगू हो जा रही है. मुझे क्या पता. शर्ट की बटन तो बंद कर लो भाई. अंडे खा खा के चेस्ट पड़े हो गए. This is what you get. दाल खाई होती थी, ये सब नहीं होता. ज़ैनब के लिए नहीं. हाँ, क्योंकि ये क्यों अपने आप के बारे में थर्ड पर्सन में बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रही ये ज़ैनी है या ज़ैनब है. इनका घर का नाम ज़ैनी है एंड इनका रियल नेम ज़ैनब है. अच्छा, जैसे मेरा नाम फुल नेम एन है और मेरा पेट नेम. What's your pet name, Em? सुनाई दिया आपको मेरा पेट नेम? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ. नहीं. क्या था मुझे सुनाई नहीं दिया. If anybody couldn't hear it, it's Imagine किसी को जोर से बुलाना है और उनका पेट नेम वो है. How are you gonna scream it for me? ऐसा लग रहा है हिचकी आ रही है. Before we carry on with the rest of the episode, the background is कि ये जो society है, इस episode का premise is कि लोगों के घर में लड़कियां पैदा हो जा रही हैं तो लोग बहुत सैड हैं. ये बहुत डिप्रेसिंग माहौल है तो हम इस पे फोकस नहीं करना चाह रहे. जो लोग नखरे वाले लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उनका मजाक बनाना चाह रहे हैं. तुम हर वक्त इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो सनी? बचपन में यही सिखाया था मुझे सबने. मुझे क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि तुम ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा अक्लमंद हो जाएगी and then people कहेंगे I don't care. कि हम सब में सबसे अच्छी किस्मत तुम्हारी है. अब देखो ना, शिराज भाई के CSS करते ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी. शादी होते होते तुम्हें 6 सोने के कंगन मिल जाएंगे. फिर तो दौलत दौलत दौलत, मनी 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 मनी, मजे मजे मजे. तुम एक अफसर की बीवी बन अंडे अंडे अंडे.
अंडे मेरे घर में मिलेंगे ही नहीं, गोश्त ही गोश्त भरा हुआ है। एक रूम मेरा होगा जिसमें खाली बोटियां पड़ी होंगी। वो लोग कहेंगे, अमीर "What is होना this चाहता room? हूँ मैं। What is लोग कहेंगे what is this room for? वो मेरे गोश्त के लिए। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, इन चॉकलेट होती है उनके पास रूम की, इनके घर में गोश्त। शिराज एंड द गोश्त। तुम्हारे बारे में, पापा के बारे में। इसीलिए तो कहती हूँ कि कम सोचा करो। What a solution. Problems will disappear if you don't think about them. खत्म हो गया। खत्म हो गया. Do you want to watch more? No, thank you. So we ended up watching more than the interview because Sheraz was just too interesting in the show. If you're interested in finding out what really happens to Zainab or Sheraz, you know, just like M did, you can watch the rest of the series on your own. ये show का नाम मनो सलवा, isn't it like based on like a Quranic concept? There was this group of people. They demanded to be given better food. God gave them man and salwa. So man, like people don't know what it tastes like. We can only guess. But there are a lot of theories that say that man literally translates as honey and salwa is quail. They call it bater in India. So it was that. But then uske baad, they started hoarding that stuff basically. They didn't eat it. They started hoarding it. And they said we need more different varieties of food. Greed is something that is so innate in human nature that you're never going to be satisfied. So this show is, there are so many examples of that greed that people think that once they reach a certain point, they're going to be happy, but they just want more and more and more. And in that process, they keep losing what actually was important in their life. Their morals, their principles, their values, the love of their loved ones, their family. God like gave people relief when they had nothing to eat and people were still ungrateful. I want to warn Log that you will meet many Sheraz in your life. And the power you give to the Sherazes is if you look at their toxicity and you're like, oh, I'm going to be harmed, there is no faith. Just remember that he doesn't. He has no power in your life because God is over everything else. So forget about the Sherazes of this world. Just आपको अपना own action लेना, आप अपने आप को पहले protect करें and then leave everything else on God. He will take care of it. हम spiritual tangent लेना ज़रूरी था because it just is so meaningful. And personally for us, for NNM, this matters. और M, आपकी क्या rating है? Episode में भी बहुत कुछ हो रहा था, which was making me very sad because again, it might be a trigger for a lot of people. It feels like everything we pick up is such a trigger. There are still, like, I know houses from where people come to ask us help and they have all these issues. Yeah. Ki, you know, shaadi nahi ho rahi, yeah, you know, my daughter got divorced over such a stupid thing ki she gave birth to another daughter. Or I don't know, all of this nonsense. The main goal of this podcast is so we can laugh and hopefully help other people laugh. Yes. Take the stress out of all this toxicity. सही बात है, हम इतनी negative thinking क्यों रखें, हम इतना negative क्यों सोचें? सोचो ही नहीं, तो तुम खुश रहोगी। रोज सुबह उठो, जब कोई थॉट है सोचो ही नहीं। कोई पूछे क्या सोच रही हो, कुछ नहीं, मैं सोचती ही नहीं। Review ratings is so 10 out of 10 Sheraz points. I think for Sheraz comedy, I would like to give 10 on 10. For the show itself, because I've watched it, I would like to give the show rating also. I think I'd rate it 7 on 10. Let's end it at a positive note. ये बढ़िया था, बहुत मजा आया. Please let us know और आप लोग किस चीज पे हमारा, hey, what's a word in Urdu for reviews? I had it on the tip of my tongue and now I forgot. The sheen in our reviews is an insult to our Urdu. Jaiza. I have never heard that. इसका जायजा नहीं, I've heard it on Pakistani news channels. इसका आज हम जायजा करेंगे. Urdu is beautiful. We are biased still. और किस चीज का आप लोग जायजा देखना चाहेंगे? हमें खत में लिखिए शुद्ध उर्दू में किस चीज का आप लोग जायजा चाहेंगे? चाय का या पानी का? या सीक्रेट ऑप्शन सी अंडे का? सीक्रेट ऑप्शन डी आलू गोश्त का. Bye. Bye.